Assalamualaikum. Welcome back to another video tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So audience, today topic is very interesting. So I hope you people will like this topic much more. So today we are going to discuss mitochondrial mode of inheritance. Means we are going to discuss either mitochondria play its role in inheritance pattern transmission from parents to offspring or not. This is a very interesting kind of thing. As in previous lectures of human genetics, in other videos we discussed, means the nuclear DNA actually plays a role in inheritance characters or trace transmission from parents to offspring. Now we are going to specifically discuss either mitochondrial DNA. As you people know about, mitochondria is present in cytoplasm of the cell, and mitochondria also own its own DNA to regulate cellular functions for somehow. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें भी कुछ डीएनए मौजूद होता है कि जो कि न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट होता है, और जो न्यूक्लियर डीएनए उसका काम ये होता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बनाना. तो न्यूक्लियर डीएनए को सीरीज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन बनाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो कुछ खास स्पेसिफिक प्रोटीन्स अप्रॉक्सीमेटली अभी तक जो आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें हम कहते हैं कि 13 प्रोटीन्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, साइटोप्लाज्म में, उसके अंदर डीएनए मौजूद है. हम देखते हैं क्या जब इनहेरिटेंस पैटर्न्स की बात करते हैं कि जब क्रॉस होता है या मीटिंग होती है, तो मीटिंग के दौरान क्या माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स भी ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इफ़ दे आर ट्रांसफर्ड देन हाउ द फर्दर और फ्यूचर डिसऑर्डर विल अपीयर, व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स वी कैन एक्सपेक्ट. सो देयर आर कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर. द कंटेंट्स इंक्लूड इंट्रोडक्शन, डिजीज मैनिफेस्टेशंस, or clinical manifestation and diseases, and further we will also study the differences between mitochondrial DNA and nuclear DNA as well. So this is all about mitochondrial genome. First, actually we need to discuss mitochondrial genome in detail and what are the differences between mitochondrial genome and nuclear genome, the genome which is present within a nucleus. And then later we will discuss how mitochondrial genome plays role in deciding inheritance patterns or transmission of inherited traits from parents to offspring or in next generation. So let's see. Here you can see mitochondrial genome actually differs from nuclear genome in several ways, and Taylor and Turnbull published this article back in 2005, and they disclosed this information. Means there are some differences between mitochondrial DNA and nuclear DNA. So actually what are those differences? The first one, mitochondrial DNA is circular, while human DNA the nuclear DNA is linear in fashion. So mitochondrial DNA would be circular, like the circular DNA also exists in microorganisms as well. So microorganism में भी circular DNA exist करता है, right? So the mitochondrial genome is built of 16,569 DNA base pairs. So mitochondrial genome contains about 16,500 base pairs, while if we will talk about the nuclear genome, then nuclear genome contains about 3.3 billion DNA base pairs. Okay, so nuclear genome contains higher number of base pairs in comparison to mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA contains only few thousands of nucleotide sequences, where the nuclear DNA contains billions of nucleotide sequences or base pairs. Similarly, mitochondrial genome contains only 37 genes. Means there are only 37 genes present in mitochondrial DNA, while in case of nuclear DNA we can expect thousands, even thousands of genes as well. So in mitochondrial DNA only there are 37 genes, and only 13 proteins are produced by the mitochondrial genes, and which includes 22 transfer RNA and 2 ribosomal RNA are also present in mitochondrial DNA. In mitochondrial genome. Mitochondrial genome also contains 22 transfer RNA and 2 ribosomal RNA as well. The 13 mitochondrial gene encoded proteins all instruct cells to produce protein subunit or enzyme complexes of the oxidative phosphorylation. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मुराद ये होती है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान
ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सेल्स, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ATP की जनरेशन होती है. मीन्स ATP विल बी जनरेटेड बाय द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen. Due to oxidative phosphorylation process, mitochondria is also known as powerhouse of the cell, and mitochondria contains a series of enzymes as well, which are responsible for the energy generation. So these enzymes are actually protein in nature, and only 13 enzymes are produced by mitochondria, or which are identified yet. And these 13 enzymes are actually regulated by 13 proteins, and 13 genes are actually the basic units which are regulating these proteins or producing these proteins. Similarly, unable to independently produce all protein needed for functionality. So mitochondria don't have any capability to produce all sorts of proteins which are produced by the nuclear DNA. So mitochondrial DNA is producing somehow some specific proteins which are necessary to lead certain cellular reactions. But all cellular reactions cannot be run on the behalf of mitochondrial gene based or produced proteins. Similarly, mitochondria imports number of gene products from the nuclear DNA. जो nuclear DNA वहाँ से जो proteins बनती हैं, that are actually imported by microorganism and used for different purposes or cellular purposes. Higher mutation rate means there is a higher mutation rate in mitochondrial DNA in comparison to न्यूक्लियर डीएनए में क्या होता है कि जो म्यूटेशन का रेट है वो बहुत कम होता है. क्यों? उसकी रीज़न ये होती है कि न्यूक्लियस के अंदर जब एक mRNA बनता है, जब वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में, तो उसकी mRNA की प्रॉपर कैपिंग होती है और टेलिंग होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म. But in case of mitochondrial DNA, there is no proper capping and tailing which can protect the RNA, or we can say the newly constructed DNA in proper. That's why we can say the mitochondrial genome have higher mutation rates rather than nuclear DNA or nuclear genome. This leads to the heterogeneous population of mitochondrial DNA within the cell. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन का रेट ज़्यादा है, म्यूटेशंस माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होगी, तो जो नए सेल्स बनते हैं तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत बड़ी वैरायटी एग्जिस्ट करेगी. हैविंग मींस डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रोटीन्स. देयर वुड बी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और उसमें बहुत सारी हेट्रोजेनिटी या डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज देयर is greater chances of mutation in mitochondrial genome. So that's why we can expect a greater heterogeneity. Let's move further. What are the clinical manifestation or diseases of mitochondrial genome? Mitochondrial mutations are not transmitted to offspring from parents. अच्छा, यहाँ पे मदर की जगह पेरेंट्स का वर्ड अच्छा है. अब हम ये कहते हैं कि यूजली क्योंकि न्यूक्लियर जो DNA दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और फॉर द participating in the next generation or in the mating. So first we need to clear about it, like there are 22 autosomes and there are one pair of sex chromosomes, 22 pairs of autosomes, and only there is one pair of sexual chromosomes. In case of we can say sexual chromosomes, there are XX and XY chromosomes. As we people know, like if there will be an egg, once the egg will be fertilized, as egg contains number of chromosomes, we can say if we can consider like egg contains XX chromosomes, right? So the egg cell basically contains mitochondria as well, and it is believed that if sperm cells also contains mitochondria, so once sperm fertilizes the egg, in generally the sperm based mitochondria is destroyed by the egg cells. Egg cells actually destroy the sperm cellular mitochondria. कि sperm के सेल में जो mitochondria मौजूद होते हैं उसको egg के सेल destroy कर देते हैं. वो कैसे? क्योंकि जब egg की ग्रोथ होती है बेसिकली egg में, या उसमें क्लीवेज वगैरह होती है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है सेलुलर ग्रोथ के लिए, या और उस सेल को कन्वर्ट होने के लिए नेक्स्ट जो सेलुलर क्लीवेज के स्टेप्स हैं उनमें कन्वर्ट होने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया. और जब स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है तो वो फाइनली डिग्रेड हो जाता है, उसकी जब कैपेसिटी वो लॉस कर चुका होता है.
लेकिन इट इज़ बिलीव्ड, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो एग है बेसिकली एग के अंदर खुद भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर की ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब वो जो एग है दैट एग इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय मदर बॉडी या मदर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी कैन से देयर वुड बी मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द एग। After the fertilization of egg, we can say there would be no chances of फादर माइटोकॉन्ड्रिया, जो फादर का जो स्पर्म है या जो जीनोम है जिसने एग को फर्टिलाइज किया हुआ है दैट डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज क्योंकि वो डिग्रेड हो चुके हैं। ओनली द माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन सर्वाइव दोज माइटोकॉन्ड्रियाज बिलोंग्स फ्रॉम मदर एग, तो मदर के एग से वो बिलोंग करते हैं। इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि मदर्स के कुछ ट्रेट्स जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन में अपीयर हो सकते हैं। ओके, इफ देयर विल बी माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस देन वी कैन से माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फ्यूचर जनरेशन और फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग एज वेल। सो दैट वाज एक्चुअली अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। Mitochondrial DNA greatly varies between unrelated families, but it should be nearly identical among closely related individuals. So एक फैमिली के अंदर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सिमिलर इन वन फैमिली, दे contains all similar kind of proteins. But if we will study the mitochondria in different families, so in different families we can say mitochondrial proteins will be different and great diversity can exist. अब माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हम लोग ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ये भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टैग मॉलिक्यूलर मार्कर्स टू आइडेंटिफाई रिलेशंस बिटवीन द फैमिलीज, या ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इंडिविजुअल एक फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं। तो बेसिकली हम उसके जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं या माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो देन वी कैन कन्फर्म दिस वन। The familial association of one person can be confirmed by mitochondrial detailed genomic studies. माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज रोल इन एजिंग एंड कैंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल जो होता है एजिंग में भी होता है कि मतलब जो जब एज बड़ी हो जाती है लोगों की तो जो सेल्स वीक हो के सेलुलर डेथ हो जाती है तो उसमें हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाते हैं। तो जो एज सेल्स होती हैं जब सेल्स की एज ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो जाता है और कैंसर में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। A given cell contains many more copies of its mitochondrial DNA than its nuclear DNA, which allows researchers to more easily obtain and analyze mitochondrial DNA samples from diseased relatives. तो हम लोग ये कहते हैं कि जो यूजली एक सेल में अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA की काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद होती हैं इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर DNA। तो हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA को स्टडी कर सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल DNA को जब हम स्टडी करेंगे तो हमने ये कहा कि ये ऑलरेडी एक फैमिली में कंजर्व रहता है, एक फैमिली में जो है मदर से बेसिकली ये आता है। तो अब एक मदर से जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग होंगे तो उनमें माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसऑर्डर्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोमिक रिलेटेड डिसऑर्डर दैट डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रैक्ड और वो सारे सैंपल्स में मौजूद हो सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अस इन अ जीनोमिक स्टडीज टू ट्रैक द डिजीजेज इन रिलेटिव्स और इन अ फैमिली। वी कैन ट्रैक द डिजीज इन अ फैमिली बाय माइटोकॉन्ड्रियल एनालिसिस और स्टडीज। Okay, here you can see inheritance patterns or a pedigree. So we will discuss one by one. Here you can see this is actually a mother and this is actually a father. Okay, so we can say this mother contains mitochondrial DNA or any mutation. This because हमने ऑलरेडी ये बात की हुई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमेशा मदर से ही एक दूसरी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफ़र होती हैं। फादर से माइटोकॉन्ड्रिया ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होते। उसकी वजह ही होती है कि फादर के जो स्पर्म सेल हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है दैट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के दौरान वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ हो जाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते करते वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बट जो एग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं दे आर समटाइम्स कंजर्व्ड एंड दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये डेवलपमेंटल की स्टेज में जब यहाँ पे जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बनने के बाद ये जो एग का माइटोकॉन्ड्रियल है दैट विल बी शिफ्टेड इनटू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग कि जो फर्दर अगर डॉटर है या सन है या डॉटर है तो ये सारे इफेक्टेड होंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन कोई मदर में एग्जिस्ट कर रही है तो ऑल द सन वुड बी इफेक्टेड, ऑल द डॉटर्स वुड बी इफेक्टेड। सेम ओवर हियर यू कैन सी अ सेकंड वन पेडिग्री। Here you can see there is a mitochondrial mutation in the mother, so we can say all the sons and daughters will be affected. Similarly, there is a mitochondrial mutation in the mother. This actually symbol represents mother, this represents father. This is a mutated mother, mother containing mutated mitochondrial DNA. So that's why we can say all the sons or daughters will be mutated and they will be having disease. So this is all about inheritance pedigree of